Hello students, having finished the revision of chapter 1, 2, 3 and I have also taken the test and the solution of tests was also given to you. Now we will move to our next chapter, chapter 4, which talks about work and energy. So first we will discuss what actually work is. So the basic definition of work is equals to force into displacement. Work is equals to force into displacement in the direction of force, ये हमारा डेफिनेशन है. और डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मतलब आपको फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट कहाँ चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अगर जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो जो डायरेक्शन है वो, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए. मतलब ये हुआ, अगर जो मैं सिंपल बोलूँ कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्शन में ही होनी चाहिए. सो नाउ in this particular picture which is at the top, you can see that there is a block and उस पर हमने फोर्स अप्लाई करा है एंड ब्लॉक हमारा स्ट्रेट जा रहा है, सामने की तरफ जा रहा है. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आई थिंक गिवन टू यू. नाउ इसका मतलब फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं एंड दिस ब्लॉक इज गोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट एंड जो फोर्स हैं वो दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है. सो इसका मतलब फोर्स जो हमें चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में चाहिए, या अगर जो मैं रिवर्स बोलूँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो हमें किधर चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन में. सो to calculate all these things, I have drawn a triangle. This is x direction, which means displacement is going occurring in the x direction, and force आपने किधर लगाया है? इस particular direction में, and this is your y direction. So now you can see that this force is acting in this particular direction. So इस force का असर कुछ ना कुछ हमारा x direction में होगा and कुछ ना कुछ y direction में होगा, which means effect of the force can be divided into x as well as in y direction. So फोर्स का जो कंपोनेंट हमने x डायरेक्शन में माना है वो fx है, एंड जो कंपोनेंट y डायरेक्शन में माना है वो fy है. नाउ अगेन apply cos theta in this particular triangle. So here I have applied cos theta is equals to fx. This component was fx upon f. So जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f हमारा न्यूमिनेटर में जाएगा. सो fx इज इक्वल्स टू f cos theta. सो fx इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा इसी डायरेक्शन में हो रहा था. सो अब हम जब वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे तो हम डायरेक्ट f ना लिख करके हम f का वो कंपोनेंट लिखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है. सो वो आपका क्या हो जाएगा? f cos थीटा एंड इनटू d. सो इसी फॉर्मूले को हम क्या लिखेंगे? एफ डी cos थीटा. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ दिस इज योर एफ एक्स. अब हम अगर जो साइन थीटा अप्लाई करेंगे सो एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ इंटू साइन थीटा आ जाएगा. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच यू आर गोइंग टू स्टडी, एंड इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10th, इट इज़ अप टू द ग्रेजुएशन लेवल. आपको ये जो कंपोनेंट करना है वो नहीं छूटेगा. इस प्रोसेस को बेसिकली हम रेजोल्यूशन बोलते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स. ओके, सो हेयर नाउ वी कैन सिंपली, डेफिनेशन हमारा अगेन वर्क का होता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट में हमारा फोर्स, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स है हमारा एफ कॉस थीटा है इनटू डी. सो ऑन मल्टीप्लाइंग एंड सॉल्विंग वी गेट एफ डी कॉस थीटा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर वर्क. सो अभी यहाँ पे वर्क की 3 कंडीशंस हैं. वर्क ज़ीरो करना है तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए. 3 चीज़ों से आप वर्क ज़ीरो कर सकते हो. या तो आपका एफ ज़ीरो हो जाए, या तो आपका डी ज़ीरो हो जाए. ओके, मतलब फोर्स ही ना अप्लाई करो, आप फोर्स अप्लाई करो तो डिस्प्लेसमेंट ना हो. इन दोनों कंडीशन में भी वर्क ज़ीरो हो जाएगा. दोनों एक साथ हों तब भी चलेगा, दोनों अलग अलग हो तब भी वर्क हमारा ज़ीरो आएगा. एक कंडीशन और बचती है, थीटा इज इक्वल्स टू 90. मतलब क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो. कॉस 90 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो अगर जो थीटा कहीं से 90 हो जाए देन कॉस 90 विल रिजल्ट इन टू ज़ीरो. देयरफॉर वर्क अगेन बिकम्स ज़ीरो. सो अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज देयर इज़ अ कुली. So this is the head of the pulley and here he is, these are his hands, and उसने सर पे अपने कुछ बॉक्स रख रखा है. ओके,
सो अब आप देखो कि वो जो बॉक्स उसने सर पे रखा हुआ है, ही विल अप्लाई अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो कुली ने फोर्स किधर लगाया, ऊपर की तरफ, बिकॉज जो बॉक्स रखा है उसका वेट डाउनवर्ड पे एक्ट वर्क करेगा। सो फोर्स इज अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शंस, एंड जब वो इस वेट को लिफ्ट करके चलेगा तो सामने की तरफ चलेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो दिस एंगल बिकम्स 90। okay, so due to, again we have cos 90 is equals to 0. So scientifically हम कुली को ये बोलते हैं, कुली is doing, कुली does not doing any work. It is not practically correct though, but when we talk about in physics, the conceptually the work is 0. अगेन एक और एग्जांपल हमारा हो सकता है, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन दिस पर्टिकुलर पाथ। सो you know the displacement is taking place in this direction, and force, इस ऑब्जेक्ट को मोशन कराने के लिए हमारा कौन सा फोर्स सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज एक्टिंग इनसाइड, तो अगेन एंगल बिकम्स 90. So again work will be 0. So these are the two examples. Now moving to our next topic, the next topic is power. So power is given by W upon T. Formula is written, you can see. Now W can be written by replaced by F into D, and D upon T is the speed. So P is equals to F into V. This is the required formula. Now this is an important formula again, बिकॉज सपोज एक आपके पास मोटर बाइक है, उसका पावर है 100 वाट। ओके, सो विच मीन्स 100 जो है वो फोर्स और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। अच्छा चलिए, अब देख, सपोज आपका वेलोसिटी हो गया है कि, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, आई विल राइट 100 इज इक्वल्स टू एफ इन टू वी। सो सपोज आपका फोर्स 20 है एंड वेलोसिटी 5 है, सो 20 इंटू 5 100, सो 100 इज इक्वल्स टू 100। ओके करेक्ट। दूसरी कंडीशन ले लें, फोर्स अगर जो मैं ले लूँ 10 ले लूँ, सो वेलोसिटी को मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, बिकॉज रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है 100। सो दो चीज़ें यहाँ से देखिए, आप फोर्स 20 है, सो वेलोसिटी 5 है। अगर जो फोर्स को हमने कम करा तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई, विच मीन्स एफ कहीं पर भी इंक्रीज़ होता है, सो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। अगर जो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, फोर्स विल डिक्रीज़। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो बाइक का बेसिकली जो सिस्टम होता है, बाइक का, जैसे आप सपोज करो फर्स्ट गियर में बाइक चला रहे हो, सो स्पीड इज़ लेस, एंड जहाँ पे स्पीड लेस होगी वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा। ये आप देखा भी होगा, सपोज योर बाइक इज़ कुछ कीचड़ वगैरह में फंस जाती है, तब आप क्या करते हो, गियर डाउन करते हो, जस्ट बिकॉज गियर डाउन करने से स्पीड कम होगी, एंड स्पीड कम करने से हमारा ज़्यादा पावर या ज़्यादा फोर्स जनरेट हो सकेगा। नाउ मूविंग अहेड, यूनिट्स ऑफ, ओके, यूनिट ऑफ द पावर इज़ वॉट जूल पर सेकेंड। यूनिट ऑफ द एनर्जी, एक तो हमारा जूल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर जो फॉर्मूले से देखें तो W इज इक्वल्स टू P इंटू टी, ये जो वी हैव P इज इक्वल्स टू W बाई टी ना, P इज इक्वल्स टू W बाई टी, सो W बिकम्स P इंटू टी। सो W क्या है हमारा, W की यूनिट क्या है, जूल, पावर का वॉट है, एंड टाइम का सेकेंड है। सो जूल इज इक्वल्स टू वॉट इंटू सेकेंड, so which means 1 joule is equals to 1 watt into second. This is an important conversion, so do remember all these things. Okay, now we have an important definition which I have not discussed when I had taken this chapter previously. So 1 HP, so if an average horse can lift 550 pound through a distance of 1 feet in 1 second, then the power is said to be 1 horsepower. I hope it is clear. Again, एक हॉर्स है हमारा, वो कितना वेट उठाता है, कितना मास उठाता है, 550 पाउंड का, डिस्टेंस कितना है 1 फीट, कितना टाइम है 1 सेकेंड। सो अगर जो तीनों चीज़ें एक साथ हो रही होंगी, सो इसका मतलब जो पावर होगा वो 1 हॉर्स पावर के बराबर होगा। सो नाउ वी हैव 1 HP इज इक्वल्स टू 550 पाउंड 1 फीट एंड 1 सेकेंड। सो 550 पाउंड को अगर जो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, वी विल मल्टीप्लाई बाई 0.456, देन जी तो हमारा आएगा ही आएगा, एंड 1 फीट इज इक्वल्स टू 0.3048 meters. So when you multiply, you get 746 watt. Now we talk about next unit of the energy, that is electron volt. So it is the energy gained by an electron when it is accelerated through one
through a potential difference of 1 volt. Okay, now we will understand what actually is happening. So here you can see that there is a बैटरी में प्लस होगा एंड एक माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में मैंने रख दिया है. अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेगा. सो इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन अभी तक स्टेबल था, आपने ये बैटरी रखते ही उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी दे दिया. ओके, सो दैट अगर जो ये वोल्टेज हमारा यहाँ पे 1 वोल्ट हुआ, नॉर्मली बैटरीज आपकी 12 वोल्ट की होती, सो वोल्टेज अगर जो 1 वोल्ट हुआ, सो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, so 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1 volt. So we get 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Now though I have explained this particular topic electron volt, but ये volt वगैरह आप you don't understand all these things still, so you have a problem in accepting all these things. But when as soon as we discuss chapter electricity, you will be okay with all these concepts. Now we'll talk about kinetic energy. So from third equation we know that v square is equals to u square plus 2as. So u square को मैंने इधर ले आया, मैं इधर ले आया. Now हम क्या करेंगे, 2s को भी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. So a becomes v square minus u square upon 2s. Now वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर जो दोनों एक डायरेक्शन में है तो सो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ मैंने s से रिप्रेजेंट किया है. ओके, सो नाउ एफ की फॉर्मूला होता है m इंटू ए. सो वी हैव m एंड a की वैल्यू ये है. सो वी विल रिप्लेस s एंड दिस s. सो बोथ s विल बी कैंसल्ड. सो w इज इक्वल्स टू हाफ m v square minus u square, and work done is equals to energy. So that energy is known as kinetic energy. So this is the actual formula for the kinetic energy. But if you treat initial velocity as zero, अगर जो initial velocity हम zero मानेंगे तो ये हमारा पूरा zero हो जाएगा. So we get half m v square. Now potential energy is given by W is equals to mgh. Formula is given at the top. Now next thing is momentum P is equals to mv. You have studied. Now squaring both side, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया. So we get P square is equals to m square into v square. Now हमने दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है. You can see that. And m स्क्वायर का एक m मैंने बाहर खींच लिया है. So now इस 2 को मैं नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में ले आया हूँ. सो वी हैव पी स्क्वायर अपॉन 2m एंड ये हाफ एम वी स्क्वायर. सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के. सो नाउ दिस 2 अगेन आई हैव taken to the other side. So 2mk. So p square is equals to 2mk. Now this formula is very important. Some numericals are based on this particular formula. So we have p is equals to root 2mk. p is equals to root 2mk. कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे भी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m, या आपसे ये भी पूछ सकता है प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. ऑल दिस थिंग्स कैन बी प्रूव्ड बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. नाउ मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट this particular law of conservation of energy in the free falling object. So I have taken this particular concept in this video. So now you can see that this is your ground and एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल है हमारा, जो इनिशियल उसकी पोजीशन क्या है ए पोजीशन पे उसका वेलोसिटी क्या है ज़ीरो. फर्स्ट वी टॉक अबाउट पॉइंट ए. सो वेलोसिटी ज़ीरो है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो. नाउ u is equals to mgh. This is the formula for potential energy. So potential energy is mgh. So total energy E is given by kinetic energy plus potential energy. So since kinetic energy is 0 and potential energy is mgh, so sum will be equal to mgh. So at point A अगर जो कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी हमारी कितनी आई, mgh. Now moving ahead at point B. Now remember at point B हमारा ये पॉइंट है एंड B तक पहुँचने में ये जो बॉल है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, x. सो विल use third equation. V square is equals to u square 2gx. So u is 0 because u is the initial velocity. So for this particular motion initial velocity is 0. So what we have, we get v square is equals to 2gx. This is the required value for v square. Now you can see all these things in the given. So now you have
v square is equals to 2gx. So kinetic energy is given by half mv square. So v is replaced by 2gx. So this 2 and 2 will be cancelled. So what we have, kinetic energy is mgx. Now पोटेंशियल एनर्जी, वी विल टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. सो अब देख सकते हैं कि जब वो x हाइट नीचे आ गया है तो नीचे से हाइट कितनी बची है, टोटल हाइट वॉज h, यहाँ तक आ गया, सो h माइनस एक्स. सो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाई mg and h minus x. So we will multiply by mg. So mgh minus mgx. When we add this, so this mgx is cancelled by this minus mgx. So again we get mgh. So again total energy remains mgh. अब देख सकते हैं आप दोनों पॉइंट्स पे, इनिशियली भी हमारी mgh थी at point A and at point B it is also mgh. Now we will talk about point C. Okay, at point C again we use third equation. So point C का मतलब, point C हमारा यहाँ पे दिया, that is your point A and that is your point C. So ये total height हमारी कितनी है, h. So A से C तक जाने में उसने कितने height travel करी है, h. So this is the equation and h की जगह यहाँ भी h ही रहेगा. So v square is equals to 2gh. Again we will apply the formula of kinetic energy, that is half mv square. So half mv square replaced by 2gh, 2 will get cancelled, so we get mgh. That is the formula for the kinetic energy. This is here. Again अब देख सकते हैं जब आप C पॉइंट पे आ गया, C पॉइंट पे H कितना हो जाएगा आपका, जीरो. सो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो. सो अगेन यू हैव K plus U which will yield mgh. So this is the uh, uh, again at point C the total energy becomes mgh. So this is what the law of conservation of energy is all about. मतलब एक ऑब्जेक्ट जब भी मोशन करती है, सो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड, सॉरी मिस, so the basic law of conservation of energy is the energy can neither be created nor be destroyed. Okay, so I hope you will be clear with this now. Okay. Now some students were asking regarding the velocity ratio. Still they were asking for the velocity ratio. So now I will discuss the velocity ratio. Suppose you have a lever, basically it can be class 1, it can be class 2, it can be any class lever. So यहाँ पे आपने कुछ okay, sorry, you have a lever like this. यहाँ पे आपने कुछ लोड रख रखा है एंड यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, एफर्ट. ठीक है, दो इट इज़ क्लास 1 लीवर, बट इट डजेंट मैटर, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द. नाउ अब इस एफर्ट को जब हम लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये लोड हमारा ऊपर की तरफ जाएगा. सो सपोज आई हैव अप्लाइड, सो योर लोड goes to this particular direction and your effort comes in this particular direction. Now velocity ratio basically क्या है, it is given by velocity of effort and velocity of load. Okay, so this is the basic fundamental definition of the velocity ratio. Now what, अगर जो मैं स्पीड की बात करूँ, सो वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो अगर जो मैं एफर्ट के वेलोसिटी की बात करूँगा तो वी एंड डी आ जाएगा. एंड अगर जो मैं लोड की बात करूँगा, सो यू हैव डी एल अपॉन डी टी. सो नाउ ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे. सो डी ई, वी इज रिप्लेस्ड बाई डी ई बाई टी एंड दिस इज रिप्लेस्ड बाई डी एल बाई टी. सो टी टी विल गेट कैंसिल. So displacement in the effort and displacement in the load, this is the required formula for the velocity ratio. So your velocity ratio can be given by what VE upon VL or DE upon DL. So now few students have confusion about mechanical advantage of this inclined plane. So this is your theta. Now this is mg, this will be equal to mg.
So this angle will also equal to theta, so this will is mg cos theta and this will be equal to mg sin theta. Again, अब एक basically अभी in this particular video I have told you, so I will go to the first slide of this particular video. Okay, this is your first slide. So here is this, that जो थीटा के साथ वाली साइड, ये देख सकते हैं आप, ये एफ है, ये हमारा थीटा है. सो एफ के साथ में जो एफ एंड थीटा के साथ वाली साइड ये है, सो ये वाला हमेशा कॉस थीटा होता है. एफ दिस एफ एक्स इज ऑलवेज कॉस थीटा, एंड जो थीटा से दूर वाला साइड होता है वो हमेशा साइन थीटा. सो दिस सेम प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड हियर ऑल्सो. Now this is your inclined plane. Okay, this is your block, this is your mg, this angle is theta, so this angle will also be theta, so this will become mg cos theta, because actual mg आपका इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है. mg और थीटा के साथ वाली साइड ये है, सो इट विल बिकम cos थीटा, एंड जो दूर वाली साइड इट विल बिकम sin थीटा. ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि एफर्ट आप लगाओगे यहाँ पे, सो क्लियर है कि अब आपको एफर्ट किसके इक्वल लगाना होगा, mg sin थीटा के इक्वल लगाना होगा. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. और जो लोड आप लिफ्ट कर रहे हो वो लोड कितना है, mg. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल. ओके, सो नाउ अगेन ma is given by load upon effort. So load is mg and effort is mg sin theta. अगर जो मैं फ्रिक्शन को यहाँ पे ना इंक्लूड करूँ, so mg will get cancel and ma is equals to 1 upon sin theta, and sin theta you can easily calculate from the figure. This was your figure. इसकी लेंथ को मैं सपोज करो s बोलूँ, इसको h बोलूँ, so sin theta is equals to what you have, perpendicular upon hypotenuse, so h upon s. so ये वैल्यूज आप रख सकते हो यहाँ पे. so ma is equals to 1 upon h upon s, so s will go in the numerator, so s upon h. This is the required formula for mechanical advantage. Now talk about velocity ratio. So velocity ratio is displacement in the effort, that is dE upon dl. So अब देख सकते हैं आप, एफर्ट आप यहाँ से लगाना शुरू करोगे और यहाँ तक ले जाओगे. सो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, s से. एंड जो डिस्प्लेसमेंट इन द लोड, सो लोड की इनिशियल पोजीशन ये है एंड फाइनल पोजीशन ये रहेगी, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वाज गिवन एज h. सो यू कैन सी दैट मैकेनिकल एडवांटेज जो हमारा आया था वो भी आई थिंक s अपॉन h था, एंड सो इज द वेलोसिटी रेशियो. So this is how you can calculate the velocity ratio and mechanical advantage. So with this I again end this video, hoping that all these things will be clear to you. If you still have a problem, you can ask me. Now there are basically the homework of this particular chapter is that solve all the relevant numericals regarding this chapter work and energy. Thank you.